Okay. So let us have a brief discussion. So let me know. ଆପଣ ତ କେତେ ଜଣ already ଲେଖିଛନ୍ତି means? Any of you? No, sir. Okay. Someone first. Okay. ठीक है. So nothing to worry. It will be a smooth process. Okay. Have you appeared for this? মানে এটা আপনারা appear করলে? Sir, I tried to write, but I wrote only 2 questions. Okay. I know, but I'm facing problems with writing. How to take attempt? ठीक है. Okay. Anyone else want to add something? What are the initial difficulties? Any problem have you faced till this time? Because see, we'll start with the discussion, but let me know what are the basic problems you're facing, what are the gray zones, where we should focus more, most, so that see, end of the process, my objective is all of our participants should able to clear this examination. That is our foremost priority. Okay, how we are doing it and what we are doing, that is a different thing. Okay, just give me 1 second. I just need to put a second. Okay. हाँ कौन कहते शेखर कहते आई थिंक I was asking. हाँ सत्य कौन हाँ प्रॉब्लम कौन फेस करछंती सर माने पढ़ी सारी छु बट किंतु अटेम्प्ट नाडो केमती स्टार्ट करियो प्रॉब्लम किसी ठीक है इश्यूज राइट ओके फर्स्ट थिंग while you are writing you are a bit confused कि आपनो how to write what not to write regarding yes, structure sir. and how to begin writing. That is your problem. Okay, genuine, Yes. accepted. What else? Our kahar kon problem achi. Let me discuss for 5 minutes, then we'll deep into the subject. Okay. Our kahar? Sir, not making. हाँ मिसान कौन तू ଟିକେ ନୋଟ ମାଇକି କରିବ ମାନେ କୋଉ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଟା ଲେଖା ଯିବ କେମିତି ଜାଣିବନି କିଛି ओके कौन लिखिबे कौन छाड़िबे ताकू नेकी कोन कंफ्यूजन अछि ओके राइट ठीक अछि हां सर से बुक तो बहुत वास्ट ना तो ते कंप्रेसर केमती निश्चय ओके राइट हां टू थिंग्स थर्ड व्हाट एल्स आउ कोन प्रॉब्लम है डिफरेंट मार्किंग ପାଇଁ डिफरेंट स्ट्रक्चर कोन कोन हबो माने 20 मार्क्स रो गोटे क्वेश्चन आछि 30 10 ओके ठीक अछि that is genuine ठीक अछि three things I have I have witnessed from your side tinta genuine concern thila what to write what not to write second thing how to restructure based on the mark of the question a third thing you told about the structures okay you're a bit confused where to start okay and how to start tinta concern mo bakku asila what else what are the other genuine concerns you have anyone ठीक अछि किए अछंती जे कि मैक्सिमम क्वेश्चन समस्त टिके रेस्पोंड करिवे एवरीवन आई वांट दिस क्लास टू बी पार्टिसिपेटरी तो अलका तो हाउ मेनी क्वेश्चन हैव यू अपीयर्ड सी आमे कहा प्रति किछि ये करियर ने एवरीवन विल पार्टिसिपेट द फॉरमोस्ट ऑब्जेक्टिव इज विल क्लियर द एग्जामिनेशन दैट्स ऑल एवरीवन हियर इज आवर यू कैन से आमे गोटे टाइप फैमिली ओके सर मु एक्चुअली सर जानि पल्लिनी केमती कोन टेस्ट देबी एबे गोटे दी दिन हेला जॉइन करछि सर Okay, ठीक अछि तो एबे आपण appear करि ना okay who else has appeared just tell me who else has appeared and how many questions if you have written one questions also I'll appreciate you sir I tried 3 questions okay you have tried 3 questions yes sir. Just let me know satya oh के कहले sir satya हाँ ठीक अछि right you have tried with the 3 questions and what else
Who else? Who else? Sorry. Kia वो रहिले? आउ के रहिले? आउ के करना थी? खाली सत्य गोटे कहले से अटेम्प्ट करचंती. Who else has appeared? Good evening, sir. Hello. हाँ समझे. नहीं एक्चुअली ना No. नहीं नहीं किसी ना एक्चुअली गोटे एटा गोटे टेस्ट सीरीज भी गोटे बैच से स्टार्ट हेची तो एक्चुअली मु सार को कहतली लास्ट माने हम ग्रुप रे भी शेयर कर दते बट सार कर नाते दैट मु सेटा शेयर कर देबी से टेस्ट सीरीज रे डिस्कशन थिला तो मु हम ग्रुप पिला को भी ऐड करिया पे मु आपन को लिंक कोडा देली ठीक अछि तो दैट्स इट एडी बहुत पिला हमर अछि जो माने आंसर राइटिंग पे एनरोल करछथि तो यू विल बी आल्सो गेटिंग द क्वेश्चंस टू राइट ओके ठीक अछि. No worry for that. Just if you want to listen, just participate करो listening पे. सही में link आपको शेयर कर देता हूँ. Okay. हाँ आउ का कौन query रहिला कहबे आउ के सत्य आपण लिखि चले आंसर्स. Who else? निहारिका लिखि चले आपण अलका तो कहले लिखि नांती. नो सर मु एबे जाय टेस्ट माने मु एबे ही जॉइन करिछि आपण एबे टेस्ट देइनी एंड मोर गोटे डाउट थिला कि हाउ टू आई मीन 60 मार्क्स रो क्वेश्चन आसुतिला ठीक तो अछि. सेम क्वेश्चन को हमें 30 मार्क्स 20 मु मार्क्स आपण को कहि ठीक हां अछि. हां सेटा ऑलरेडी जेन्युइन कॉज थिला. हां आउ के अछंती just let माने you come forward जदि आउ के लिखि चंती so was I'll be bit I'll be at least that much sensitized कि को मन लिखि चंती at least के लिखि नांदे आउ okay ठीक अछि. Let me start with your genuine concerns. First thing first, see अपन जदि क्वेश्चन देखिए it is also little miscommunicated. Okay, the questions I have framed, it was completely 10 and 15 marker. Okay, and I have given a bank of questions, and out of that, some of the questions needs to be you can say selected for your test one. But because of some miscommunications, so this type of questions were being asked. That 30 marker, 50 marker, and all those things. As far as new pattern of questions are concerned, you should focus about 10 and 15 marker because OPSC adopted the complete UPSC pattern, and UPSC you are getting 10 and 15 marker questions only, nothing beyond that. Okay, if at all you are getting it, you will be in a comfortable position to write. Don't worry for that. Okay, but आमे गोटे को या दीटा टेस्ट करिबा एटलीस्ट गोटे टेस्ट करा जोटा कि माने जो भी टिके बड़ो marker questions like it is being asked in this particular test, just for your practice sake. Other than that, for your exam you should practice 10 and 15 marker. Okay, that's all. First thing. Second, if you see the 10 and 15 marker, जदि आपण 10 और 15 marker लिखिबार अछि ना, what you need just a basic understanding of the particular topic, just a basic understanding. For 60 marker you need extensive contents. Okay, आपण को सब definitions दरकार थिबो, सब points दरकार थिबो, you need 3 to 4 figures and all these things. That is not the case for the 10 and 15 marker. Okay, just a basic understanding, use of a common sense, and try to incorporate by depicting certain figures or different maps and all. That will fetch you good amount of mark. Okay, second answer. How to write, how to start, it is really a question. See, जदि भी सपोज आपण किछि जिंस लिखिबे माने एबे जेमति टेस्ट आपण कॉन्सिक्वेंट टेस्ट गुडा हबो बा जो भी टेस्ट ऑलरेडी हेई जाई छै से टेस्ट को आपण बसंतु आपण जरूरी नहीं. सी फर्स्ट व्हाट यू शुड डू, नाउ देयर आर 5 number or 6 number questions are there. You should see what are the questions you are able to answer, or what are the questions you are able to at least understand, if not answer. Suppose I'll tell you one thing, Köppen classification, it is being asked, A type, B type, C type, something like this. You know Köppen classification, you have read some while ago, but now you're not able to recall. It is not an issue, because just before examination you will be practicing, you will be revising, and you will be going. Don't worry for that. First thing first, you should not lose your confidence on that aspect. First thing, you should first see the questions and try to analyze whether how many questions you are able to understand. And understand, it does not mean that suppose we Köppen classification, the
ages of that jamana has gone, where it will be asked, write a note or write a essay on the Köppen classification 60 marker. You will be asked specific questions, A type, B type, C type, or the Köppen classifications with respect to or applicable to Odisha context, questions like that. Okay. So you first read the question and try to analyze whether you are able to understand the core of the questions that is asked by the examiner. That is the first and foremost, you can say, importance. Getting it? First जिनसे बुझिबे questions देखिए कौन पचारिछि. Second, जदि आपन को मन पड़ू नहीं सही समय रे, do one thing, take your notes, read it out once, then try to write down. Or else, if still you're forgetting, see the notes and try to write down, but write it down. Third thing is the structure of writing. The structure of writing, see, it is something you won't be hitting the correct structure of writing on the first day. Mind my word, no one can do it. You have to start writing first. How to write? I have told you two fundamentals. One, you should understand first, read the question twice. If you're getting Köppen classification or something like this that you really know, then you read one more time about the question, because it may not be direct Köppen questions. It may be little implied type of, or little, you can say, application oriented type of questions. So try to read and try to find the core objective, what is being asked in the examination. If it is being 60 marker questions, if you are writing here and there also, it is okay, because to cover a 60 marker questions with the, like, always it is not required to hit the core of the questions. Sometimes here and there we have to write just to fill it up, the 6 to 8 pages or the 10 pages that is required for your examination. But in 10 or 15 marker, first thing, you have a time constraint. Second thing, you have to hit the right core of the answer. Okay, on the first page itself, because you will be writing 2 pages or 2.5 pages or 3 pages or 3.5 pages. That is the maximum. 3.5 pages you won't be able to write, because if you start writing 3.5 pages, that much papers will not be available. Okay, and that much time you won't be getting also. So that is the basic. With this key points, you start writing. Okay, and see, first, once you're reading the questions, there are suppose 10 number of questions or 15 number of questions, suppose. And out of the 15 number of questions on the first reading or the second reading or the third reading that you're giving, how many questions you are able to understand? That's the first thing, first target you try to analyze. Because this is not a test one and it will complete. There will be a lot of tests. Okay, and the objective of the test is two things. First is how you're able to understand the questions, and chronologically you will start understanding the questions in a better way as the test will progress. First. Second is to improve your writing skills. Mugging up the content right now and vomiting in your test series, that is not the objective of this particular initiative, because you should understand and you should write. That's the main objective, and correct your and improve your structure of writing. Okay, content and everything, don't worry for that. Obviously, by reading it like repetitively and try to like, if you try to understand the core concepts, that will be sufficient for your examination. Okay, and once you have read the questions 2 times, 3 times, maybe out of 15 questions you will be able to understand, suppose, say 7 or 8 or 10 questions. Remaining there will be 5 or 6 questions that may be a new type of questions, or maybe the terminology given in the questions will be a bit new for you. Then try to find out what is being asked by googling it. Like, you can Google it. Okay, so sometimes what happens, if you see the questions in the test series also, there is a what was the even the question number 1 itself. What was that? Question number 1 ke padichanti kon thila? Under the second cycle of erosion, highlight the geomorphic features that are found in the earth topography with suitable example in context to Odisha. Relate it with the few examples. That is what being asked. So first thing, what is the second cycle of erosion? That is the main keyword. You may not have read this in a very direct way. Second cycle of erosion to amok kiछि syllabus re nahi, ba maybe apon पढ़ी भी नथै परंती. Kei पढ़िले what is second cycle of erosion? Any of you ke Google kale? Sir, I think triad Penny plane upliftment ki.
Yes, it is a uplifted pen. David and Pence model. See what actually, if you go by this, what is actually being asked, it is asked about the polycyclic landform. Getting it? It is a polycyclic landform. It is asking the features of the polycyclic landform. That is called the second cycle erosion, because first cycle it is completed, second cycle then multiple cycles it is coming, na cycle of erosion if it is coming, then we are calling it as a polycyclic landforms. You must have read about the polycyclic landforms. पढ़िछन समझते polycyclic विषय रे. I can expect this basic things. Sir, please explain. I think I have not read it. तो syllabus रे अछि ना polycyclic टाइम कोन बोल गोटे थर आपण erosion complete हे गला. Once erosion completed, then one more time. See, generally what we are seeing, जेतला आपण Davis कथा कहउछन. Some of you have told no Davis cycle of erosion. Davis cycle रे कोन होतला? First, sir, erosion upliftment. Yes, sir. First upliftment होतला. Yes, then gradually it decreases. Upliftment पहुंची गला परे गोटे highest level पहुंची हो प्रथमे सेते पर्यंत किछि erosion हबो नाही. हां, once it is reached to the maximum level, then what will happen? The erosion will start. Yes. Okay, the complete cycle of erosion will pass through 3 phases. तीनटा phase रे pass करिवो. कोन phase रहिवो? Youth phase, mature. Youth, mature and old stage. Old phase. Okay, right? तीनटा phase रे pass कला. Old phase रे पहुंचला पर जो final outcome टा जो हबो, according to Davis, what will be the name of that final outcome, final landform जोटा finally बॉडी जीवो? That is called the peneplain. Okay, so we assume कि after peneplain the whole cycle of erosion is completed. Okay, suppose after peneplain again the whole cycle of erosion again starts from the youth stage, then again mature stage, again old stage. How it is being started? Okay, that is again a particular point of discussion. Jodi suppose say peneplain area ta jodi uplift he gala hotre, because ता तळे suppose भावो तो किछि गोटे volcanic type रो किछि tectonic activity आसिला, और से tectonic activity कोन गला से peneplain टा को ही आ गोटे higher elevations को नेकी पड़ेला. Okay, after reaching that higher elevation, what will happen? Again, जो stream रो वर्तमान kinetic energy नथिला, we'll discuss that thing. मु ताको discuss करिवे, don't worry for that. Today's discussion will be about the polycyclic only. तो मुझे कहया को चाहूची आपण कि आपण बुझिबार अछि key terms गुडा को. Okay, there will be certain key terms you may not be very much familiarized at the first reading itself. Okay, so once you have find out, you are able to, you can say understand 10 questions, then remaining 5 questions you should Google it. At least some concept you will get. Then you read and write, no issues. What I'm stressing right now, you should write it. You are writing wrong, you are writing right, that is immaterial as of now. You should write it, so that what will happen, you will understand much of the questions, you will try to like be much more accurate towards the core of the question that is asked by the examiner. And third thing is like due process, you will also enrich your contents. By writing 10 and 15, when you will start writing 10 and 15 marker questions, you will realize by yourself the content that you have already gathered, because you are an optional student. Okay, so for every topic, if I'm saying earthquake, if you're saying volcano, if I'm saying Köppen, if you're saying that air movement or any type of circulations, air circulations, every concept when I'm saying something, you have a bit of understanding at least. I expect this thing. आपको जणा अछि बेसिक जिंस जणा अछि हां पूरा कंटेंट एना मु आपन कोइ 6 पेज लेखो you may not be able to reproduce that, but you know एबे जे मु कहबी air circulations, obviously you know this thing na, air circulation de tinta cell he ki circulations hochi kemti tropical first layer rahibo, ta subtropical rahibo, tare subpolar rahibo, then polar, you know those things na. Maybe exact terms, exact terminology, maybe tinta cell ro gote cell no naam no the, but trade winds hala, westerlies hala, easterlies hala, these are very basic things. I think as an optional student we know this. Okay, that this is my point. If anyone has any other concerns ki kichi deviate hochi, then do let me know. Apun jodi kichi onyo concerns rahi jaichi,
See, before starting this class, let me clear with one thing, whether I expect everyone to have bit of idea, bit of basic understanding about geography, yes or no? I expect everyone, you have once read with all the topics, at least I expect this. Yes, sir. Yes, Yes, sir. Everyone. Okay, ठीक है जी. नहीं, कहाँ still I even deviations also I'll entertain. Just tell me if any of you have not read at least once. I'm not talking about understanding. I'm not talking about how much contents you have remembered. No, just I want to know how much anyone who have not read at least once. Don't worry, don't be shy ki no mu padhini onne padhichun, not like that. Any of you, otherwise na it's very simple for me. Okay, आपण पढ़ी नाथि ठीक अछि संगीता, प्रॉब्लम नहीं जता आपण तो माने हम माने ये geography group रे सेटा नो क्लास चली छी that you will be able to cover, don't worry for that. Okay, आउ के रहिले आउ के सेंटेशन जे बिल्कुल पढ़ी नाथि थर. Okay, so it means I expect basic like understanding from your side. Okay, you have doubts, no issues, I am there to clear it up. Okay, so as you only told me you have gone through the subject at least once, so I expect you all to write at least. Okay, jodi kichi doubt hoji, we'll be discussing the questions what is being given in your you can say exam like test and all. We'll be discussing thoroughly, don't worry for that. Last thora jetobale test series heitila gote problem kon heitila, not exactly mo problem कहबिनी पिलांकर कोन मिडवे जेतबेले टेस्ट कला तो पिलांको कोन इश्यूज तला पिलांको दरकार तला जे माने सब गुडा को आउथरे पुनी कवर कर दियंतु माने शॉर्टली माने वेरी कंसाइज वे. तो जेतु आथरे से शॉर्ट रे मु कवर करिया स्टार्ट कली, देन व्हाट विल हैपन, सी विथ द लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम टेस्ट रो डिस्कशन आउ थ्योरी रो डिस्कशन एट ए टाइम पॉसिबल हबनी, because this is like I don't have that much of liberty of time as of now. So data at a time cover kariya possible bhi. So last time what happened, I have told them to okay, I'll cover every topic in a you can say rapid revision type of module, and I'll not be able to discuss the questions in your class. So do one thing, you write the answers and give it to me, and we'll try to just evaluate and try to yes, point it out wherever any value additions is required. But again, kichi mane last moment kichi pilanko say bhi mane they were also a bit aggrieved ki nahi mane kahin ki amo questions guda discuss nahi. See, on the first day itself, I just want to clear it up ki apan ko requirement jaha achi na, based on that we will be going. If you want because it is a test series like a program, so in test series the best thing is to discuss the question. Okay, multivarious questions that can be asked in UPSC format or the new changing format. I think that is the best way, because this course intention is like this. But if you want discussions of each and every, suppose each and every topic that is mentioned in the syllabus is not possible to frame in the question in the test series. We'll try to frame maximum question possible. We will not be doing the repetitions of questions, but it is not possible to touch each and every point that is mentioned in our syllabus. So beyond the questions also, there can be possibility of like the questions may come from that areas also. So we expect you at least see through this program, you are able to understand the questions. You are able to write the answers in a structured way. We'll be giving you pointers how to, I'll be guiding you at my best level possible, how you can improve your writing structures by giving value additions and all those things, and whatever your queries and all those. But certain questions will be left out still, because we will try to put the questions that is we perceive to be of maximum importance, like taking into consideration the current prevailing situations or the questions that is being already asked in the UPSC or the previous year OPSC questions. Maybe the mark will be little less, but the
previous year OPSC questions are still relevant. Okay, not in a very direct, questions are not that relevant, but whatever the dynamic questions being asked, that is still relevant. Okay, but तापर मध्य किछि questions बढ़ी जिवो. So if you feel ki no, whatever questions it will be discussed in the test series, I'll going to follow only that and I'll restrict my syllabus to that point. No, it will not like help you in a better way. Okay, so this program orientation is like this. Now mu kiछि आपन को help करिवे and आपन मते किछि help करिया को पड़ियो, and finally this process we have to clear it. बुझी परले समझते कहार still किछि doubt अछि, you are free to ask, because I just want to clear your viewpoint first, because going into the discussions is not an issue. We are going to discuss it. It's not like I'll going to left out the questions that is being asked in the test series, but I just want to clear everything. I just want to give a perspective. If you are not writing, then do write. And the objective of the course is like this, and expectations of the course should be like this. So this is I just want to clear on the day one. Anyone kichi kahar jodi aap beyond kichi doubts achi, aap beyond kichi expectations achi, then do let me know. I try to accommodate to the maximum possible extent. Anyone? Sir, namaskar. Biswajit Patel. Biswajit. Sir, a year, sir, हमारा जो mapping आसेगा data का world map India map आसेगा या only India map आसेगा? कारण syllabus रे confusion करके दीजिए sir. Syllabus रे actually तो लिखी छी ना, syllabus रे तो mention करी छी कि data को part 2 माने because जेतु बदली नहीं part syllabus टा optional रो. Yes sir, but UPSC pattern है only India रा sir आता है. UPSC pattern see मु कोन कहू छी ना, आमे be little on the safe side. आमे इंडिया वर्ल्ड दीटा को देखि के जिबा. वर्ल्ड मैपिंग रे ना as such एबे पर्यंत OPSC रे ट्रैवल करिनी. जो ट्रैवलिंग पॉइंट हो जेटा इंडिया मैपिंग रे, आ इंडिया मैप तो आसीबो ही आसीबो. वर्ल्ड मैप पे हमें जदी वर्ल्ड कार्टोग्राफी पे अल्प बहुत भी प्रैक्टिस करिके जाउ तो मोरलेस हम हेई जाउ छी काम. तो हमें काहे ताको छाडी के जियो, बिकॉज़ सिलेबस रे सी OPSC कोन करछि ना UPSC रो ऑप्शनल सिलेबस को कॉपी करिनी. माने OPSC जो प्रीवियस ईयर सिलेबस थला ताको जेंति सेंति रखछि. Why we are expecting the question pattern to be like this? काहे कि UPSC रो हबो जेहेतु ऑप्शनल को 250 मार्क कर देला, तो सेति पे we expect it will be in the UPSC format. Because of 60 marker तो स्कोप रहिला ना, how you expect 60 marker in a 250 mark question माने पेपर तो ठीक से छिड़ू नहीं ना 260 मार्क हिसाब रे. So on that analysis we are expecting the questions will be on the UPSC pattern, but cartography जेहेतु specifically remove करिनी, तो chances are there they may ask about the world map. तो world geography रो भी cartography हमें करी के जीवा, be on the safe side. बुझिले विषय I guess. ठीक अछि. लास्ट टाइम करी जनी कोन प्रॉब्लम हो, किछ असुविधा होबानी, करी के जीवा. ठीक अछि. ना ना सर मु बस पचार देली, हमको तो देखु छी. हां थरे देखि के जीवे. My sincere advice to everyone, just go through once because it is still there in your syllabus. Okay. ठीक अछि. We'll start for the today's discussion. आउ जदी कहार किछि डाउट अछि कहंतु, otherwise we'll be starting. सर क्वेश्चन अबाउट रे आपण टिके जदी परिबे आपण को नोट्स टिके देखि लेबे केमदी आपण माने नै जंदी अटेम्प्ट नोट्स. प्रथम कथा होची मो पाखरे आपण को क्वेश्चंस देखिया पे आज सच विशेष नथिबो, बिकॉज़ मो समय रे प्रॉब्लम कोन थिला, मते टाइम मिलेनी. तो मु कोनसी आज टेस्ट सीरीज वगैरह सेमती भी हम समय रे किछि एते मिलु नथला रेडिली अवेलेबल, बिकॉज़ OPSC पई जो भी माने इंस्टीट्यूट्स अछंती से माने बहुत कम टेस्ट सीरीज एनरोल करथिले, रोल आउट करथिले सेते बळे. द्वितीय कथा होची UPSC रे जो टेस्ट सीरीज थिला सेटा हमके रेलेवेंट नथला, जेतु 60 मार्क टाइप क्वेश्चन थिला. तो मो क्वेश्चंस हार्डली माने 5-6 क्वेश्चंस रु अधिक मु केबे लिखि भी नथिबी, बट किछि किछि जगह रे मोर नोट्स अछि, जो जगह रे मते नोट्स मो रेलेवेंट लागे आपन को देखि देबी. ओके, बट सबु जिंसर भी मु नोट्स करिनी, जोटर नोट्स अछि देखिबी आपन को. ठीक अछि. ओके सर. ओके ठीक अछि. तो हां जेंते में डिस्कस करथिले कि
पॉलीसाइक्लिक जो कथा आपण कहले ठीक अछि इट्स द सेकंड साइकिल ऑफ इरोजन सेव करिया okay so this is polycyclic this is the second cycle of erosion जोटा के हमें polycyclic erosion कहूछु माने polycyclic landform कहूछु तो generally आपण जे कहिबे जेमति आपण कहउतले Davis cycle of erosion जे देखिबे this is written what is the geomorphic cycle of erosion or Davis cycle of erosion different stages देखि से pass करूची there is a youth stage there is a mature stage and there is a old stage कहि परिबे कहार कोन फीचर्स अछि एनीवन what is the feature of youth stage कोन हुए कौन होला यूथ स्टेज रे सर V shape. हाँ ठीक अछि सिंपल माने सिंपल ये रे बुझिबा देयर इज अ लैंडफॉर्म तो लैंडफॉर्म रो अपलिफ्टमेंट हला ओके अकॉर्डिंग टू डेविस टिल द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ अपलिफ्टमेंट देयर इज नो इरोजन ओके जोटा कि क्रिटिसिज्म से फेस करथिले तो अप टू हाईएस्ट लेवल ऑफ इरोजन पर्यंत कोन नदी वेट करथिला कि तू पहुंचे हाईएस्ट पर्यंत तापर मु इरोड करिवि दैट इज द पॉइंट ऑफ क्रिटिसिज्म यू मस्ट हैव रेड अबाउट दैट okay once it has reached to the highest level then it will start the cycle of erosion तो youth stage रे कोन हबो जेहेतु हाई ए एते माने हाई लेवल रो बर्तन गोटे स्ट्रीम तळाड को फ्लो करजी ए स्ट्रीम पाखरे कोन थिबो हाई ग्रेडिएंट थिबो बहुत फोर्स थिबो ता पाखरे जेहेतु ए फोर्स अधिक अछि देन व्हाट विल हैपन जेतोळे आपण देखिबे टेबल ऊपरे जदि आपण गोटे फ्लैट टेबल अछि सपोज गोटे फ्लैट जॉर्ज माने गोटे गोटे पॉलिथिन नियंतु से फ्लैट पॉलिथिन ऊपरे किछि गोटे पानी पकेबे सो फर्स्ट थिंग से पानी तो सीधा रहिबनी ने मेंटेनिंग टाइप रो रहिबो जदि भाबंतु से पॉलिथिन टा को हाथ रे धरि केमते टेकी देबे टेकी गोटे साइड को टेकी देबे तो जेतोळे आपण देखिए वर्षा दिन किछि पॉलिथिन बंधाई थाउची तो जेतो आपण टेकी दोचन को होउची ऑल ऑफ अ सडन इट विल स्टार्ट फॉल लाइक दिस what has happened you have given a gradient you have given some force kinetic force पढेतले तारो हठात से बर्तन आउ ए जो एमिति जो पानी थिला हठात ए जो पॉलिथिन एटा गोटे पॉलिथिन ऊपरे थिला पॉलिथिन टा को हठात आपण टेकी देले गोटे साइड व्हाट विल हैपन इट विल fall like this it won't be falling like this okay what is happening gradient आपण ताको बढ़े दोचंती तो gradient कोन हाईएस्ट थाय जेतोड youthful stage थाय because it has started rolling down it has started flowing down from the highest you can say landform जेतोड ए जगह रो फ्लो करिया स्टार्ट करिवो जेतोड हाईएस्ट ग्रेडिएंट थिबो आपण जेमति कहले v शेप वैली क्रिएट करिवो काहे कि v शेप वैली क्रिएट करछि बिकॉज़ आपणकर वर्टिकल इरोजन मैक्सिमम होउछि वर्टिकल इरोजन ओके तो चैनल टा एकदम नैरो थाय बट बहुत डीप थाय से चैनल टा ओके जेतोड आपण मैच्योर स्टेज को आसीबे देन व्हाट विल हैपन मैच्योर स्टेज रे धीरे धीरे v शेप गुडा को बर्तन u शेप रे कन्वर्ट होबा स्टार्ट हबो आउ बर्तन मिएंडरिंग देखिया स्टार्ट करिवे रिवर गुडा कर तो ये समय रे कोन हुए जो वर्टिकल इरोजन टा एटा कमीवा स्टार्ट हुए एंड लेटरल इरोजन बढ़िवा स्टार्ट हुए माने हॉरिजॉन्टल इरोजन हां दैट इज कॉल्ड द लेटरल इरोजन तो नदी रो जो विड्थ अछि एटा बर्तन बढ़िवा स्टार्ट हबो ता डेप्थ ता बर्तन धीरे धीरे कमीवा स्टार्ट हबो so that is the basic of the mature stage अब finally old stage रे कोन होतला old जेतोले हम ताको कहूछु जेतोले ता कैरिंग कैपेसिटी बहुत कमी जाय बिकॉज़ ए बर्तन जो रिवर थिला सेटा से पहाड़ रो आसी गोटे पूरा फ्लैट एरिया को बर्तन एंटर करि सच्ची जोटी ता पाखरे किछि ही ग्रेडिएंट नहीं बिल्कुल काइनेटिक फोर्स नहीं तो ता पाखरे जहां भी सेडिमेंट थिला जो भी सेडिमेंट को सी दे के आसिला से सेडिमेंट को सी निजरो रिवर बेड रे ही बर्तमान डिपॉजिट करिवा स्टार्ट करिवो so through this it is creating a flat surface and finally जो flat basin जोटा में create होची ताको हम peneplain कहूछु with the peneplain or with the formation of delta and everything it is the whole cycle of erosion is completed एटा में कहूछु तो ए peneplain रे बर्तन आसी पहुंचला जनरली हमें केम देखुछु ए टाइप रो अपन देखंतु this is your cycle of erosion तो ए जगह स्टार्ट हला आपनकर ए जगह रो अप टू ए पर्यंत this is your mature stage sorry youth stage जोटी कि आपनकर deep बहुत आसीबो this is your deep okay now from this stage onwards आगु जे तल देखि जो mature stage हमें कहूछु बर्तन wide हवा स्टार्ट हला now you can see this is wide not like this now it will start like this voice break होची for everyone no
So from this it has gone to this. So this is called जो deep जगह रे बर्तन wide हवा start हला. बुझी पर्यंत ये सब जिंस ना क्या डाउट होची? ये सर बुझा पड़छि. हाँ ठीक अछि. तापरे फाइनली इट हैज गॉन इनटू द ओल्ड स्टेज. ओल्ड स्टेज रे कोन हैला? अगेन वाइड तो रहिबो ही बिकॉज़ एमती नै जे चैनल रो जो नदी अछि नदी रो विड्थ ता कमी गेला बिकॉज़ विड्थ कमिया पे किछि बर्तन माने किछि फोर्सेस लागी थी. बट व्हाट हैज हैपेंड जो डेप्थ ता थिला से डेप्थ तो एनी हाउ इट हैज गॉन डाउन धीरे धीरे कमिबार लागितला. बट इट इज कम टू ए माने डेप्थ इट इज कंप्लीटली फ्लैट. यू कैन से देयर इज नो डेप्थ. इट इज कंप्लीटली फ्लैट राइट नाउ because tar carrying capacity tar pakhe kichi gradient hi nahi. Whatever the sediment it has carried, it has dumped in its like tar nijo river bed re hi se dump kariya start kala. Or finally it has reached into this particular phase jota ame peneplain kochu. Peneplain ko also monad rock madhya kohanti. It are same thing. But this is the peneplain. This is one of the lowest feature. Okay, it's kind of a plane. Hardly you will have any type of undulations. Okay, but एटा तो नॉर्मली खत्म हे जाइथिला. जेतोले हम पॉलीसाइक्लिक लैंडफॉर्म कथा देखुचे सेतोले व्हाट विल हैपन ऑल ऑफ अ सडन दिस पर्टिकुलर जो लास्ट फेज में पहुंचीथिला जो यूथ सॉरी ओल्ड स्टेज ता ए ओल्ड स्टेज ता बर्तन ऊपर को उठी गला. नाउ यू विजुअलाइज दिस पर्टिकुलर पॉइंट इट हैज राइज्ड टू दिस पर्टिकुलर एलिवेशन. एटा केमती उठिला दीटा पॉसिबिलिटी ही पर. गोटे इंस कोन ए पर्टिकुलर जो भी लैंड अच्छी ए लैंड तले किछि टेक्टोनिक एक्टिविटी चली छि. से टेक्टोनिक एक्टिविटी जोगु जदि एटा ऊपर को उठिला हाउ इट कैन गो अप. जदि सपोज किछि लावा वगैरह ए तले डिपॉजिट हला थ्रू दैट इट हैज क्रिएटेड सम डोम लाइक स्ट्रक्चर लाइक दिस एंड इट हैज पुश्ड दिस लैंडफॉर्म इनटू ए हायर लेवल. दिस कैन हैपन बिकॉज़ ऑफ टेक्टोनिक एक्टिविटी. एक्सेप्टेबल. अदरवाइज जदि ता साइड रे जो ताको एडजेसेंट जो सरफेस एरिया गुडा को अछि से एरिया रो जदि डाउन ग्रेडिंग हे गला जदि ए गुडा को कोन से प्रकार तळु को आसी गले दिस एरिया इज स्टिल हियर. दिस इज स्टिल हियर बट द एडजेसेंट एरिया हैज फॉलन डाउन बाय इट्स एलिवेशन. सेम अगेन टेक्टोनिक एक्टिविटी हे पारे. अपन जतोले ब्लॉक माउंटेन्स कथा देखिथियो हॉर्स एंड ग्रेवन यू मस्ट हैव कम अक्रॉस दिस पर्टिकुलर टर्मिनोलॉजीज जब रिफ्ट वैली क्रिएशन होची. यस सर. समझते ठीक है. यस सर. तो सिमिलर टाइप ऑफ ऊपर को जाई पारे तळु को आसी पारे बिकॉज़ ऑफ द इंटरनल फोर्सेस. और जदि ए पर्टिकुलर एरिया टा तळु को आसी गला बिकॉज़ ए एरिया जेमती सेमती अछि ता सराउंडिंग एरिया टा तळु को आसी गला. बर्तन जो रिवर टा एमती फ्लैट रे फ्लो होची अगेन इट विल स्टार्ट डिपिंग तळु खसी होता. Yes. Then again youth stage initiated. This is again new youth stage. Again the youth stage and then again it will be followed by mature, then again old stage. Then what has happened already gote cycle of erosion complete he jaithila. Now from the old stage again the second cycle of erosion started. This is what asking your question, second cycle of erosion. बुझी पारले सर जो तल को डाउन होला सेटू टिके बुझिलानी सर बुझिलेनी पॉलीसाइक्लिक सर जो पढ़ी दांती सर मेंडोनिक रॉक जो फॉर्मेशन हाँ, हबनी हाँ, कि हाँ. सर सीए किछि सप्रेशन दिए कि ओ माने सरफेस ऊपर जे मेंडोनिक रॉक रो सच किछि सुनंतु सेंति किछि जरूरी नुह. देखंतु आमे ना सी जो आपण मेंडोनिक रॉक कथा कहबे बा मियांडरिंग सिस्टम प्रथम कथा होची आमे जना जदि जदले बुझेको चेष्टा करिया ना कंक्लूसिव जिंस को रखिबानी बा बेसी टेक्निकल जिंस को सामने रखिना. आमे साधारण कथा जे बुझिया ना बहुत इजी हो बुझिया पे केवल हम टेक्निकल वर्ड्स को केवल बुझिया रखते. दैट्स ऑल. एग्जैक्ट रीजन कोन इट कैन बी एनीथिंग. अपन जदि बुक रे भी देखिए बुक रे भी कोन लिखाई छै माने इधर ऊपर को उठिला और इधर सराउंडिंग एरिया तळो खसिला तीटा जिंस लिखाई छै. ठीक अछि हमको सही ही लैंग्वेज रे बुझिया रे काहे की उठिला काहे की तळो खसिला. that we should not go very deep into that particular logic. बुझी पारले because if question will be asked on this particular line. okay जो माने बुझी पारले नि आउथरे मु कहूची सुनंतु आपण प्रथम साइकिल ऑफ इरोजन तो पूरा कंप्लीट बुझिले ना. एटा आपनकर यूथ स्टेज थिला सॉरी हां यूथ थिला तापरे जहा भी हला एटा धीरे धीरे कमी की फाइनली एडा फ्लैट रे पहुंच जेतला. दिस इज क्लियर. दिस इज वन साइकिल ऑफ इरोजन कंप्लीटेड एज पर योर डेविस ना एडी काहू डाउट थिला
सर ये मध्य रिवर टाइप रो ना यूथ स्टेज एटा रिवर रो ही एटा कंप्लीट रिवर रो एटा फ्लुवियल ही मुकुच ठीक अछि फ्लुवियल लैंडफॉर्म समस्त पढ़ी थिबे फ्लुवियल लैंडफॉर्म रे डेविस साइकिल रे पर्टिकुलर एई जाग आसी पहुंची गला ठीक अछि तो डेविस के अंतर हां सॉरी सत्य क्वेश्चन पचरे थिला हां पचरंत सर ये जो हमर थिला डेविस को मॉडल टा सर एटा को पर्टिकुलरली को गोटे रीजन पे लागू होइतिला कि ना एमती से यूनिवर्सली नहीं नहीं ऑब्वियसली यूनिवर्सिटी नुह सी एग्जैक्टली मन पड़ने को एरिया को सी गोटे नहीं थिले कि कहि पे सेमी एरिड ना को एमती थिला मन पड़ गोटे कंपैरिजन अछि डेविस आ बैंक्स भितरे तो से भितरे अछि गोटे सेमी एरिड एरिया को जने नहीं करथिला आ जने एमती टेम्परेट एरिया को नहीं करथिले कोन एग्जैक्ट मते मन पड़ने रीजन सर डेविस जोटा नेइथिले सेटा इरोजन साइकिल 1899 पे जोटा कि सर हमर अमेरिका जो सेमी एरिड रीजन अछि सेटा को भी करथिले यस हां हां बैंक्स कोन नेइथिले तारो माने आउट के डेविएटेड बैंक का को नहीं थिले एटा डेविस नहीं थिले सेमी एरिड एरिया को सर बैंक रो सर एरिया मोर मन नहीं बट से कहथिले कि लैटिन माने अमेरिका डेवलपमेंट साइड सहित इरोजन भी हां डेवलपमेंट और इरोजन एट ए टाइम हो सर हां ठीक अछि तो सत्य सुनो तो मते एग्जैक्ट टर्म द मन पड़नी माने को सर एग्जैक्ट पेनी प्लेन टा हमरो ग्लासियल इरोजन टी पेनी प्लेन टा नहीं पेनी प्लेन टा फ्लुवियल यस सर फ्लुवियल सुनो तो एबे मु कंफ्यूजन हो छन समस्त मु प्रथमे फास्ट मोते ठीक क्लियर करबो दंतु सत्य आपन को क्लियर हैला कि ना कोन पछरियो कहनंती सर सेमी एरिड रीजन को नहीं करथिले ना हां सेमी एरिड रीजन नहीं करथिले ठीक है सर हो सर ठीक अछि हां सुनो तो समस्त मु कोटे थर कहि दोची वर्तमान आमे कोन बुझे चेष्टा करछु हम बुझे चेष्टा करछु पॉलीसाइक्लिक इरोजन रो अर्थ कोन बुझंतु पॉलीसाइक्लिक रो अर्थ होची गोटे साइकिल कंप्लीट हैला परे जनरली इरोजन सरजिबा कथा किंतु सेई जगह रे न सरी की जोटी सरीबार थिला से जगह रे आउ गोटे साइकिल स्टार्ट ही गला ता फल रे मल्टीपल साइकिल को आमे कहूछु पॉलीसाइक्लिक इरोजन बुझी परले ए जिनसा फ्लुवियल रे भी ही पारे ए जिनसा आपण ग्लेशियल रे भी ही पारे आपण को कोस्टल रे ही पारे कास्ट ही पारे किछि भी ही पारे बट जेहेतु हम डिस्कशन करिवार अछि आम सिंपलिसिटी पय आमे गोटे पर्टिकुलर इरोजन को कंसीडर करूछु जोटा कि फ्लुवियल को वर्तमान पे आपण फ्लुवियल जगह रे ग्लेशियल भी नहीं पारंती किछि प्रॉब्लम न हो बुझी परले मु कोन कहूची आउ सिंपल लैंग्वेज कोन कहिबी गोटे साइकिल ऑफ इरोजन कंप्लीट हैला परे जोटी सरी जिबा कथा सेई जगह रे आ गोटे नुवा साइकिल ऑफ इरोजन ट्रिगर होउची ता फल रे जो फाइनली गोटे लैंडफॉर्म ता देखंतु एटा तो लैंडफॉर्म हबा कथा ना गोटे उच्चारू स्टार्ट ला धीरे धीरे इरोड हेकी एकदम फ्लैट रे पहुंची गला एटी सरी जिबा कथा किंतु ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ए जो फ्लैट एरिया टा बर्तन अपलिफ्ट हे गला ए पर्टिकुलर जगहटा आ एटी न रही कि एटा ऊपर को उठी गला केमिति ऊपर को उठला मु आपन गोटे ब्रीफ आईडिया देली ए तळे सपोज किछि टेक्टोनिक एक्टिविटी हिची ए पर्टिकुलर एरिया टा ऊपर को उठी गला पॉसिबल ना पॉसिबल नुह यस सर पॉसिबल हां एबे पर्यंत जो नदीटा बहुथिला एमति उच्चारू आसी कि ए जेतले पेनी प्लेन को आसी एटी फ्लैट रे एमति नॉर्मली बहुथिला एमति सीधा ही जाउथिला नदीटा पूरा फ्लैट रे वर्तमान सेई नदीटा ए ऊपर को उठी गला वर्तमान ए जगह तळु खसियो पुडी ना यस सर ठीक अछि जेतले तळु को खसिया स्टार्ट कला देन ए पर्टिकुलर नदी रे आउ थरे ताको काइनेटिक एनर्जी मिली गला तो माने सेम ए जिंसटा आ सहित समान हे गला ए पर्टिकुलर फेस सहित जेमति एटी खसुतिला देन आउ थरे तार इरोजन स्टार्ट करिवो वर्टिकल इरोजन करिवो तापर आउ थरे लेटरल इरोजन बुझिवो तापर आउ थरे पेनी प्लेन क्रिएट करिवो गेटिंग इट ए पर्टिकुलर पॉइंट रे जोटी इरोजन सरीबार थिला बिकॉज ऑफ अपलिफ्टमेंट again the new cycle of erosion has started हां ग्रेडिएंट इरोजन आउ थे ताको नुवा ग्रेडिएंट मिलवा स्टार्ट हो तापर रे पुनी अथे साइकिल ऑफ इरोजन स्टार्ट हो बुझिले एनीवन स्टिल हैविंग डाउट यस सर ये जो रीजन को हमें नहीं कि कोई पर ई जगह रे हमर जो नदी जो आनी थिला एलुवियल सॉइल से जगह रे एकाठी करके पुनी आउथरे ही माने ऊंचाई नहीं सेटा जनरली सेमती हुए नी
बिकॉज कौन हुए ना सी गोटे जिनस कहते ग्रेडेड रिवर कहते बुझी परछन ना बुझी परछन ग्रेडेड रिवर कौन मींस अप रु डाउन को बहुत हो ग्रेडेड रिवर अर्थ होची कोन सी ग्रेडिंग गोटे जिनस कहते माने जे देखो तीटा जिनस हुए गोटे जिनस होची इरोजन और सेकंड जिनस होची जो सेडिमेंट कैरिंग बुझी परछन ना जो सेडिमेंट को हम गोटे जगह आ गोटे जगह को हमें नै की जाउछु तो जेते इरोजन हबो जेते से ऊपर काटिबो सेते से कैरी करिबा दरकार बुझी परछन ना जो एटा गोटे इक्विलिब्रियम अछि निहारिका किछ कहिबे इरोजन एंड डिपोजिशन माने जिते इरोड इरोज करिया सेते से डिपोजिट करिया दरकार बुझी परछन ना जदि आपण जेमति कहउछन ना कि जदि गोटे पर्टिकुलर पॉइंट रे इरोजन सरी गला ना तेन तार डिपोजिशन सरी जिवो बट एमती के ही परिबन जे ए टू काटी की ये ए जिंसटा को एते बढ़े दी पारिबो अनलेस अंटिल देयर इज अ इंटरनल फोर्स दैट इज वर्किंग अंडर इट यदि एमती जिंस हो थाता देन ये जो पॉलीसाइक्लिक लैंडफॉर्म ता ना दुनिया रो सब रिवर देखा को मिल थाता बट दिस इज नॉट विटनेस्ड एवरीवेयर सर्टेन रीजन रे देखाउ जे जोटे ए टाइप रो टेक्टोनिक एक्टिविटीज बा अदर इंटरनल फोर्सेस गुडा को वर्किंग होछि बुझिले गोटे रीजन म आपन कहले सेही पर्टिकुलर पेनी प्लेन ता ऊपर को उठिला दैट इज वन रीजन अदरवाइज से जेमति हम पढ़थिले जदि ऊपर को देखिया जस्ट वन सेकंड अगेन लिखे देली कि हो जेमति कहली कि ए रिवर ता फ्लो ही के आछी एमति फ्लैट फ्लो होची ए पेनी प्लेन जोटी अछि ता साइड रो जो एरिया ता अछि ता आगु को जो एरिया ता अछि जदि हठात ये तळु को खस जाए सी लेवल ता डिप हे गला सपोज एंगेटा जे कि आगु सी रे तो पडुथिला ना सपोज सी लेवल ता तळु खसी गला देन व्हाट विल हैपन इट विल स्टार्ट गेटिंग ग्रेडिएंट अगेन दैट कैन आल्सो हैपन इधर दीटा ऑप्शन पहुंचुची इधर से पेनी प्लेन ता नीचे ऊपर को उठी गला अदरवाइज तार जो सराउंडिंग एरिया ता सेटा तळु खसी गला दीटा केस रे आउ थरे से जो साइकिल ऑफ इरोजन ता ट्रिगर हबो आउ थरे स्टार्ट हबो क्लियर समझ बुझिले बेसिक यस ओके माने हमें गोटे पॉइंट 8 मध्ये ऐड करि परिबो ना माने सेकंड टा जोटा हमरो पॉलीप्लेन अछि एटा हमरो गोटे अजम्पशन मॉडल को नेकी करचंदी नहीं एक्चुअली अजम्पशन मॉडल नुह ए जेंटला पॉलीसाइक्लिक जो हम कहूछु एटा एक्चुअली हम विटनेस करिछु एटा गोटे टाइप रो बुझि परछन एटा आफ्टर थ्योरी कहले चलिबो माने जो जगह रे ना हमें देखिले माने लैंडफॉर्म को हमें सपोज गोटे फ्लूवियल लैंडफॉर्म चलथिला एटा सब किछि ठीक भाबरे वेल एक्सप्लेन हे गला बट हठात देखिले से जगह रे कि जोटी पेनिप्लेन रहया कथा पेनिप्लेन जगह आउट से टू स्टार्ट हिज यूथ फेजेस बुझि परछन ना तो ए टाइप रो जतोले ऑब्जर्वेशन देखा गला ना देन like whatever the geologists and everyone they started thinking what may be the reason and finally with all these discussions they finally arrived at this particular conclusion which parle eta gote type of reverse theory you can say in a better way yes sir okay ठीक है तो let us have a bit of discussion so what is the माने टिके देखिबा this is your polycyclic landform see this the polycyclic landforms are the geological features these are the geological features so that result from a complex interplay of multiple geomorphological processes over an extended period of time okay multiple geomorphological process माने तांको भितरे बहुत इंटरप्ले हवा फल रे ए फाइनली ए टाइप रो लैंडफॉर्म ता क्रिएट हिची हां आ गोटे कथा हम आपन कहि पारे एमिति भी हे पारे कि गोटे फ्लूवियल लैंडफॉर्म आसिला सेटा आसी सरी गला तार पेनिट्रेट ता परवर्ती समय ना गोटे ग्लासियल लैंडफॉर्म मे बी स्टार्ट हिची बुझी परछंती दैट कैन आल्सो हैपन इट इज नॉट ऑलवेज रिक्वायर्ड टू बी मे बी समय सहित गोटे आइस एज स्टार्ट हला बुझी परछंती सो आफ्टर दैट देयर इज अनदर ग्लासियल लैंडफॉर्म माने डिफरेंट टाइप ऑफ लैंडफॉर्म जेते बळे सेही जगह रे देखा होची ना तो दैट इज द पॉलीसाइक्लिक लैंडफॉर्म ठीक अछि बट जनरली in general you won't find this type of landform you will be finding fluvial as the fluvial hi outre hobo glacial अछि त outre glacial hobo ठीक अछि so that is what so these landforms are typically exhibit a combination of different erosion and deposition processes okay leading to their unique and intricate shapes okay so the term polycyclic indicates that these landforms are undergone several cycles of erosion okay several cycle of erosion जोटा कि sedimentations and weathering हमें देखा को मिलुची तो different type of features जोटा हम क्वेश्चन रे पचार थिला what are the features you can see
there is a paired river terrace. What do you understand by river terrace? देखो, it is called the river terrace. जितबले एमती slope एई टाइप जो हेछि, these are called the river terraces. Okay, river terrace एमती काहे की हेछि? Because chronologically एटा आपनकर पेनी प्लेन थिला ना, देखि परछन पूरा फ्लैट एरिया टा. ए पेनी प्लेन रो जितबले एई जो पाखरे प्रथमे ऊपरे फ्लो होतला, तापर धीरे धीरे तळुक आसीया स्टार्ट हला. माने प्रथमे तो ए ऊपरे फ्लो होतला, तापर धीरे तळुक आसीया स्टार्ट हला, एंड फाइनली इट इज फ्लोइंग हियर. व्हाई इट इज हैपनिंग? ए जिंसटा काहे की हेछि? बिकॉज़ आपण जे देखिबे जितबले फ्लो करिवो गोटे रिवर टा, से रिवर पाखरे जो भी रॉक्स थिबो बा तार साइड रे जो भी रिवर बेड थिबो ताकू से इरोड करिवा स्टार्ट करिवो. ओके, तो gote, just let's read it once so you'll get a better idea first. So the paired river terrace, these are the examples of the topographical discordance. Okay, but generally this is not general fluvial landform. Okay, so they are the geomorphic features commonly found in the fluvial landscape agency dekha jaye. So they consist of two distinct level of elevated landforms. जेमते हमें कहले दीटा distinct, यदि आपण ए लेवल को ए लेवल सहित कहिबे दीटा elevated landform, एटा गोटे लेयर जेछि ता तळे आ गोटे लेयर अछि. ओके, so this is two distinct layer. So there are two distinct level of elevated landforms or the terraces on both side of the river valley. आपण देखिया को मिलुछि. So this appearing like a set of steps on the platforms. Step type आपण देखा होछि. Okay, paired river terraces are formed due to the change in the river base level or the variations in the erosional and depositional process over the period of time. तुम चिंता आपण कहिली कि प्रथमे रिवर एठी फ्लो होतिला, बर्तन ताकू इरोड करी करी चलची. नाउ द रिवर हैज गॉन डाउन, गोटे लेवल तळकू खसला. फर्स्ट एइटा इरोड करथिला, बर्तन ए लेवल तळकू खसला. नाउ इट विल स्टार्ट इरोडिंग लाइक दिस. देन अगेन इट हैज स्टार्ट इरोडिंग लाइक दिस. देन 80 केसला, then 80 केसला. तो एमती टाइप धीरे तळु खसिबो. Then what will happen? Eventually you will see ऊपर एरिया गुडा को step बेडा देखा जिवो. Okay, this is common both side of the river. एपोटे मते सेम फीचर्स देखा जिवो आ मझिरे रिवर फ्लो होतो. Okay, so it is called जो आपण कहली paired terraces. Next type of features कोन देखा जिवो, that is called the uplifted peneplain. मु आपन को जो जिंसटा कहउथली बर्तन से peneplain टा uplift केमथि हला. An uplifted peneplain is a geomorphic feature that represents an ancient nearly flat and land surface that has been uplifted or exposed due to the tectonic forces. How to voice break होची? No sir. No, sir. ठीक अछि. संगीता कि आपन नेटवर्क इश्यूज थिबो बते. ठीक अछि, मु जेमति आपन कहली किछि टेक्टोनिक फोर्सेस बा किछि इंटरनल फोर्सेस जोगु कोन हला से पेनी प्लेन टा जो फ्लैट सरफेस ता थिला सेटा बर्तमान ऊपर को पळेला. ओके, इट हैज गॉन अप एंड इट इज नाउ एक्सपोज्ड. व्हाई इट इज सो? बिकॉज़ ऑफ द टेक्टोनिक फोर्सेस. ओके, और अदर जियोलॉजिकल प्रोसेस किछि भी इंटरनल फोर्सेस आपन को हेइ पारे. The penny plains, generally हमें जदि penny plains, because this is nothing to do with this, normal penny plain definition लिखुचे. The penny plain are characterized by these are the low relief, माने generally low lying features गुड़ा को, and extensively eroded. This is already eroded and nothing left to erosion. Okay, they are considered to be the mature landscape, माने old landscape of final outcomes हमें कोचो resulting from the prolonged weathering and erosion over the millions of years. एटा हमें जानि छे डेविस लैंडफॉर्म्स रु ही हमें देखि छे जिंसटा काहे कि ए पेनिप्लेन बर्तन अपलिफ्ट हैला. व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस? यू कैन सी, इफ यू सी दिस, these are the processes. First is peniplanation. Peniplanation रे कोन होची? नॉर्मल पेनिप्लेन रो फॉर्मेशन होची. तो peniplanation is the process of extensive erosion that gradually wear down a region to form a nearly flat. माने एडी कोची पेनिप्लेन रो फॉर्मेशन केमते हैला हमें जानि छे, आउ डिस्कस करियन. Next होची टेक्टोनिक अपलिफ्टमेंट. मु जेंते आपन कहली, बिकॉज़ ऑफ एनी टेक्टोनिक एक्टिविटी और फोर्सेस इनसाइड दिस से पेनिप्लेन टा बर्तन ऊपर को उठी गला. सो इट हैज रेज्ड, इट कैन राइज द एंटायर रीजन टू ए सर्टेन हाइट. ओके, दिस इज द सेकंड पॉइंट. नेक्स्ट आसीबो इंसिशन एंड अपलिफ्ट. ओके, व्हाट इज इंसिशन एंड अपलिफ्ट? सी दिस, फॉलोइंग द टेक्टोनिक अपलिफ्ट जो जेतोले ऊपर को उठी गला, the river or other erosional agents, जो भी river बा other erosional agents जो माने ताकू काटू चंदी, इंसाइज रो अर्थ बोलचुचंती
इनसाइज माने कोन काटिबो कट ओके जीएपी ताको काटुची से पर्टिकुलर फीचर को पेनी प्लेन को so this will cut the uplifted penny plane craving valleys and creating the new relief feature ता अर्थ कोन बर्तन जेमति आपण बुझंतो बर्तन पेनी प्लेन ता एमति नॉर्मल थिला ता ऊपर रिवर फ्लो होतला बर्तन पेनी प्लेन ता ऊपर को उठी गला it has now lifted here and once it is lifted here it will start dipping जेतोले डिप करिया स्टार्ट हो तार बर्तन वर्टिकल इरोजन हबो ए वर्टिकल इरोजन कोन करियो पेनी प्लेन को दीटा पार्ट रे डिवाइड कर दबो ए मझे से काटी दबो ना ताको लाइक दिस इट विल स्टार्ट टिपिंग तो सही जिंसटा एट लिखाई छी द फॉलोइंग द टेक्टोनिक अपलिफ्ट जेतो ऊपर को उठी गला परे रिवर और अदर इरोजनल एजेंट जोटा भी चली छी ता ऊपर बीइंग it's a begin to incise मान ताको कट करछि कट इनटू द अपलिफ्टेड पेनी प्लेन को बतन काटिबा स्टार्ट करियो कोन काटी कोन क्रिएट करियो इट विल स्टार्ट क्रेविंग माने कार्विंग आउट द वैलीज एंड क्रिएट द न्यू फीचर्स बतन नुवा फीचर्स से भी क्रिएट करिया स्टार्ट करियो दैट इज द थर्ड पॉइंट लास्ट वन is the exhumation so exhumation se kon is the process of exposing the uplifted penny plane through a incision and erosion is known as the excision माने सिंपल एई प्रोसेस ता कोइ से कोची माने आपण बर्तन से जो पेनी प्लेन ता बर्तन इरोडेड हे कि लो लाइन रे पड़थिला ना बर्तन ताको ऊपर को उठे की एक्सपोज कर देलु एंड नाउ इट इज कट इनटू पीसेस because of this running water okay that has the carrying capacity that has the you can say gradient force okay so this is the four processes by which the penny planes are uplifted clear next is the incised meanders inside meander अर्थ कोन मु आपन जेमति प्रथम रे कहि देथिली meander अर्थ कोन जेते बेले एमति टाइप रो किछि फ्लो करूची ओके तो माने रिवर ए टाइप रो फ्लो करता है बर्तन इनसाइज्ड meander केते बेले होउची जेते बेले सेम meandering ही होउची बट एटा कोन ना जेते बेले नॉर्मल meander देखु प्लेन रे हुई एकदम फ्लैट सरफेस रे हुई बर्तन ये फ्लैट सरफेस रे न हे कि ता साइड रो एरिया गुडा न अपलिफ्टेड हे जाइथियो बर्तन ए ही जिंस जो कहली आपन को जो हमें जस्ट ऊपर जो जिंसटा देखिले ए जिंसटा देखिले एक्जेक्टली सेम थिंग इज हैपनिंग हियर ओके व्हाट इज दिस तार ऊपर जो एरिया गुडा को अछि ये आकु काटिबा स्टार्ट करियो लाइक दिस you will see this it is like this it will start cutting but ए जो ता साइड रो एरिया टा फ्लैट न हे कि टिके राइज्ड एरिया थिबो ताको मु आपन केमति देखिबी कुछ फिगर अछि हां you can see here this is meandering हेची clear meandering but generally जदि एटा फ्लैट रे जदि meandering हे थांता देन कोन हेता ना एटा फ्लैट नॉर्मली रिवर टा एमती कटी एमती बुली बुली की जाइछि but now here it is not only getting at a twist and turns but also the adjacent area ए जो adjacent area देखंतु this is not flat this is a elevated relief type of structure okay तो ए जो हाई रेज्ड एरिया रे ए टाइप रो जो कटुची एटा काहे की हेची बिकॉज़ ऑफ दिस पॉलीसाइक्लिक लैंडफॉर्म ए जो आमे कहूचे ना जो इधर रिवर तळ माने रिवर रे वर्तमान आसी गला माने जो अपलिफ्टमेंट हला तो अपलिफ्टमेंट हबा फल रे रिवर धीरे धीरे ऊपर काटी तळुक आसी बिकॉज़ नॉट इन ए डे ए जो ऊपर को उठिला जो आमे कहूछु अपलिफ्टमेंट जो हला एटा तो गोटे दिन रे हेइनी एटा धीरे धीरे हेइची तो प्रथमे ऊपर लेवल रे काटिया स्टार्ट करथिला देन ता तळुक एमती खसी आसी गेटिंग इट आउ आपण कहबे जे ठीक अछि एबे तो यूथ स्टेज आसी गलानी तारो ना पुनी मियांडरिंग काहे की होची बिकॉज़ मियांडरिंग एथि पे होची बिकॉज़ जेहेतु ए पेनी प्लेन ता अपलिफ्ट हला ना आगुर तो एटा ଗୋଟେ पेनी प्लेन ही थिला ना आगुर बतन पेनी प्लेन रे जनरली सॉफ्ट रॉक्स थांती ठीक अछि आ सॉफ्ट रॉक हार्ड रॉक रो ଗୋଟେ टाइप रो कॉम्बिनेशन थाए जेतोले सॉफ्ट रॉक और हार्ड रॉक रो कॉम्बिनेशन आसे ना तोले मियांडरिंग हबार चांसेस अधिक थाए बिकॉज़ सी जनरली वाटर एमती फ्लो ही की जाउची what will happen if it will encounter a hard rock तो ये कोन करियो ये हार्ड रॉक रेजिस्ट करियो ताकू तो सेतिवे से सॉफ्ट रॉक जो आडे थिबो से आडे से टर्न करिया स्टार्ट करियो ओके देन इट विल स्टार्ट फ्लोइंग लाइक दिस देन अगेन वन हार्ड रॉक विल कम इट विल स्टार्ट meandering again so like this meander will come तो सिंपल कथा कहूची जरी रेज्ड प्लेटफॉर्म रे किछि उच्चा प्लेटफॉर्म रे जति ए meandering होची इट इज इनसाइज्ड meander और जदि नॉर्मल flat रे होची that is normal meandering okay so एतिके at least minimum understanding रखंतु and try to see this what is written over here
हाँ मुझे कहती incised meanders are geomorphic features formed by the river in which the channel has deeply cut into the surrounding landscape. The surrounding landscape को ସେମାନେ କାଟିଛନ୍ତି deeply cut, okay, creating sinus bend. ଯେମିତି କହୁଥିଲି sinus bend, sinusoidal wave जो ଅଛି ନା ସେମିତି sinus bends or the meanders with deep, steep and canyon like walls. যদি নর্মাল ହେଇଥାନ୍ତା নর্মাল ফ্ল্যাট ରେ ଏ canyon type walls create ହେଇନଥାନ୍ତା, ସେଟା flat area ଥାନ୍ତା. Okay, these meanders are characterized by their elevated position. ମୁଁ ଯେମିତି କହିଲି it is not flat, it is elevated positions above the present day flood plains. ଆଜି ଡେଟ୍ ରେ जो flood plains जो ground level ଥିଲା ତା ଉଚ୍ଚାରେ ରହିକି ଥାଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଗୁଡାକ. So this is given over here. केमती incised meander create ହେଲା exactly ସେଇ ଜିନିଷ. ପ୍ରଥମେ erosion ହବ, flat level create ହବ, तापरे से meanders रो माइग्रेशन हबो. माइग्रेशन केमते हो मु आपनको कहूतली एबे कि सपोज एबे गोटे meander 80 अछि, ठीक अछि. से meander एक्चुअली कोन था ना दीटा पार्ट थाए, गोटे ना आउटर साइड गोटे इनर साइड. एटा देखंतु इट इज दीटा बैंक थाए, गोटे आउटर बैंक आ गोटे होछि इनर बैंक. आउटर बैंक रो अर्थ कोन, जदि एटा meander ता देखिबे आपण रिवर एमती जदि फ्लो होछि लाइक दिस. सो रिवर जेतोले फ्लो होछि एटा होछि तार आउटर बैंक आ एटा होछि इनर बैंक, ठीक अछि. तो कोन करियो आउटर बैंक को सबले खोली खोली जीवो बिकॉज़ ए रिवर रो फोर्स टा एपटे पडुछि ना ताकू. तो दिस विल स्टार्ट जो एटी थिला आउटर बैंक ता बर्तन एटी के शिफ्ट हिजो धीरे धीरे याडू खोली खोली जीवो. जेमती खोली खोली जीवो तार इनर बैंक रे डिपॉजिट करी करी जीवो. तो सिंपल कथा ए जो ता बर्तन अछि ये धीरे धीरे आगु को बढ़ी बढ़ी जीवो, ये भी सेमती पछरे लागि थियो तार. बुझी परछन समस्ते. तो आउटर बैंक सबले भितर को फसी फसी जीवो, इनर बैंक ता ताको फॉलो करी करी आसीबो काहे कि एपटे सेडिमेंट जमा हे आछी और एपटे से खोली खोली चलछि आगु को. गेटिंग इट. ताकू ना meander माइग्रेशन कोंथि. नेक्स्ट इज बेस लेवल लोअरिंग. बेस लेवल लोअरिंग रो कोन जो नॉर्मल हमें कहूछु तो लोएस्ट पॉइंट टू व्हिच ए रिवर कैन इरोड. ता अर्थ कोन एटा काहे के क्रिएट होउची. मु जेमति कहली आपन को दीटा जिंस होइते पारे, इधर जो पेनी प्लेन थिला ये निजे ऊपर को उठी गला, दिस कैन हैपन. अदरवाइज ता जो सराउंडिंग एरिया अछि, सराउंडिंग एरिया माने कोन से जो सी बा ओशियन जो डिप होउची से ओशियन ता तळु को खसी गला. So that can also एटा को हम कहूछु बेस लेवल लोअरिंग. सेही फल रे मध्ये ए टाइप ऑफ meanders मध्ये क्रिएट ही परंती. ओके, so this can because of the tectonic uplift of the surrounding areas or a dip into the sea level or dipping ही गला. That can also be possible. Next, erosion and insertion. मैं already आपन को कहि देछि what is insertion, what is erosion. Then terrace formation. Terrace formation माने हम जस्ट तागरे में देखिथिले what is terrace formation. ए जो टाइप ऑफ फॉर्मेशन होनी जो ऊपर लेयर तापर तळ लेयर ता तळ लेयर ता तळ लेयर ताको terrace formation कहउछु. काहे कि chronologically erosion ही जीवो, that is called the terrace formation. Okay, and last one sorry एटा किछि पॉइंट नै एक्जेक्टली ए जिंसटा से कहउछि कोठी देखा जीवो. Incised meanders are generally or commonly found in the areas where the landscapes has experienced tectonic uplift or change in the sea level. Either से tectonic uplift रे सी ऊपर को जाईची, अदरवाइज सी लेवल रे तळ को खसीची. दीटा को केस रे आपन को एई टाइप रो meanders देखिया को मिली परिबो. ओके, these features are essential for the understanding of the issue. हमको एते दरकार नाही. So this is done. Next is the nick point. What is nick point? See, nick point or अर्थ होची there is a sharp or the abrupt change in the longitudinal profile of the river stream. Okay, काहे कि जिंसटा होची there is a sudden drop in the elevation or the deepening of the river gradient. It is also known as the nick point कहंती बा cascade मध्ये कहंती. The nick points are sufficient geomorphic features often indicated on the active erosion of the river. देखियो हम कोन होची nick point. See, normally river एमती flow होतिला, all of a sudden river गोटे particular point रे dip करिवा start कला. जो point रे dip कला हटात तार माने जो तार ग्रेडियंट अछि एटा जेतोले डिप करछि ताको हमें निक पॉइंट हमें कहउछु. ओके, तो ये निक पॉइंट जनरली कोन पे होछि, को प्रोसेस रे क्रिएट होछि. इधर डिफरेंशियल इरोजन रो अर्थ कोन डिफरेंट रॉक टाइप्स that have a different type of erosion. जदि suppose hard rock पडिला then से erode हबोनी, but soft rock जदि पडला then erode हबो. Okay, so it can lead to differential erosion
जेमते हम कहू when the river encounters a transitions from more erodible rock to more resistant rock बर्तन सॉफ्ट रॉक रु जति हठात से हार्ड रॉक एनकाउंटर करूची it can erode it can have a differential erosion. Okay, the soft rocks are eroded more quickly causing a sudden change in the reverse gradient. Okay, ताको हमें differential erosion कहूछु. Next is base level change. मु आपन जो कहले हठात यदि sea level जदि dip करूची, so nick points can also form when the base level of the river changes. So base level is the lowest point to which the river can erode. Usually एटा को हमें कोन कहूछु कोनोसी प्रकार लेक ही पारे, सी ही पारे बा ओशियन ही पारे जोटी फाइनली से रिवर टा ट्रेन करूची. अदरवाइज टेक्टोनिक अपलिफ्ट जोटा हमने ऑलरेडी पेनी प्लेन रे देखिथिले. तो these are the basic points जा फଳରେ कि आप these are the basic features and the processes through which the polycyclic landforms are formed. Basic टिके बुझा पड़ला. Basic little किछि किछि हाँ सर बुझे थरे पढ़िबे आको आपनको बुक्स रे भी एनी स्टैंडर्ड बुक यू कैन फॉलो इट इज गिवन मो सेमति भी ई मटेरियल आपनको शेयर कर देबी आप एटा पढ़िला परे ना टिके देखिबे इवन बुक रे भी लिखा हिची जे ओडिसा रो को जगह रे आपण ए फीचर टा पाइबे. ओके जनरली ब्राह्मणी आ महानदी भीतर जो डेल्टा रीजन टा रहिला सेही एरिया रे एटा देखिया को मिले बट स्टिल यू फाइंड the resources where it is mentioned को जगह रे आपण ए जिंसटा देखिया को मिलिबो. ओके क्लियर ठीक अछि. आज पई मु जस्ट एटा मु कोनसी क्लास न पे असच मूड नथला मु भी एते प्रिपेयर हेनते मोटे डिस्कस करियर एथि पे थिला कि आपण समस्त लेखंतु प्रथमे माने जो भी जिंस हम बर्तन डिस्कस कले आपको टिके दिमाग रे रखिबे जदि पॉसिबल हो एटलीस्ट काली किछि क्वेश्चंस आपन को टेस्ट 1 रो लिखिबे टेस्ट 2 भी आपन को आसीबो काली बट इफ नॉट टेस्ट 2 एटलीस्ट ट्राई टू राइट समथिंग फ्रॉम द टेस्ट 1 जो भी मु आपन को मॉडल और प्रोसेस कहली से प्रोसेस लिखिया ट्राई करंतु. ठीक अछि सर ए पीडीएफ रे ओडिसा जो लिंक अछि सरी कहले कोन कहले सर ए जो पीडीएफ आपण पढाइला एदरे ओडिसा एटी मु केवल गोटे माने हिंट देछि बिकॉज़ मु ओडिसा रो पूरा ए भितरे कवर एक्चुअली ना मु मटेरियल भी माने बनै भी नथिले तो हठात ऑफिस रे आसी कि जति कि पारबी सेति मु बनैथली बट डोंट वरी आई विल नॉट स्किप एनीथिंग आई विल डिस्कस ऑल टिप्स जस्ट आई हैव गिवन यू ब्रीफ आईडिया कि को टाइप रो स्टार्ट करिवे आई हैव गिवन यू बिट ऑफ अंडरस्टैंडिंग कि को जिंसो को टाइप रो अपन अटेम्प्ट करिवे. Rest assured कि every question that is asked in your test series is going to be discussed in your class. Don't worry for that. But meantime, अपन लेखंतु किछि बुझिले सर वन डाउट सर जो ओडिसा रिलेटेड एग्जांपल्स पचारुछि सेटा पई सी ओडिसा रिलेटेड एग्जांपल्स पई देखंतु प्रथम फास्ट एंड फॉरमोस्ट जिंस होछि हमर इंटरनेट सोर्स. ठीक अछि द्वितीय जिंस होछि आपनकर जो सेमति भी आपन को ज्योग्राफी पई गोटे दिटा बही अछि ना ओडिसा रो कोन से ऑथर को नाटा जीसी रॉय के जीसी रॉय रे भी आपन मिलि जिवो जनरल स्टडीज पई ना जीसी रॉय देखिबे आपन जीसी रॉय रे मिलि जिवो आ गोटे भी बही अछि दीटा बही अछि हला मु से बही रो ना गुडा भूली जाई छ ऑथर नाटा बट देयर आर टू बुक्स either of the book you can follow because the content remain GC Roy रे भी content almost same ही अछि. ठीक अछि तो सेठी भी आपन को जेंति पॉलीसाइक्लिक लैंडफॉर्म्स भी किछि माने फीचर्स विषय डिस्क्रिप्शन अछि तो यू कैन हैव ए जस्ट ब्रीफ आईडिया. आपन ना सुनतु जेबे भी क्वेश्चंस आसीबो केबे भी एडा कहिबन जे ओडिसा रो पॉलीसाइक्लिक लैंडफॉर्म्स ऊपर आपन वर्णना करंतु कहि कि 15 मार्क रे तो पॉलीसाइक्लिक लैंडफॉर्म रो बेटर अंडरस्टैंडिंग दरकार ता सहित हमु किछि एग्जांपल्स दरकार वी हैव टू साइट इट दैट्स ऑल. बुझि पछन जे क्वेश्चन स्पेसिफिकली ओडिसा रो एग्जांपल जो ए क्वेश्चन रे पर्टिकुलरली पचारिछि हां ए मु आपन कहउतली ना ए क्वेश्चंस ता आपन जे देखिबे जनरली आपन ब्राह्मणी पैतरण रो जो इंटरफ्लुक्स अछि ना से एरिया रे आपन किछि पॉलीसाइक्लिक लैंडफॉर्म्स देखिया को मिले. अरे डिटेल ता मु भी एक्चुअली बाहर एथि पे कर सी आपन जेमति कहले ना क्वेश्चंस मु फ्रेम ही करेनी मु जो क्वेश्चंस फ्रेम करतली से क्वेश्चंस आपन को दिया हेनी बट जेतु दिया हेछि तो ऑब्वियसली डिस्कस तो करिवे तो सेति मु अकॉर्डिंगली भी मो मटेरियल्स पर्यंत प्रिपेयर करनी ऑब्वियसली मु डिस्कस तो करी आपन जेतु मु देखिली टेस्ट सीरीज हे गलानी बट एते फॉलो रेस्पॉन्स आसीनी पिला लिखि नाती
So I just want to take a class with a bit of discussion so that you will be enlightened to write at least your answers. I would rest assure your discussion, all the questions will be discussed, and your answers, your loopholes, and everything will be, the value additions will be given to you. ठीक अछि? सर मॉडल आंसर किछि देबे वर्ष या मॉडल आंसर माने नहीं, मॉडल आंसर मु देबी ना, मु जेमति ए क्वेश्चन पर्टिकुलर जिंस आपन को डिस्कस करिली, it's a model answer. If I'll add the Odisha part, then it is a model answer. This type of model answers will be given to you. ओके सर, ठीक अछि? Sir, one more doubt. For हाँ 30 marks किंतु आपण question, काइंडली what शेयर should करियो be the... बाहर एटा गोटे लास्ट टाइम हेतला प्रॉब्लम कि मु बहुत मोर नोट्स देथिली, बट मो नोट्स सब बाहर को जाइतला, तो सेटा गोटे खराब लागितला, बिकॉज़ आपण पढिया पे मु दोची, आपण जदी स्कोर करिवे मते खुशी लागे, बट बाहर जदी नोट्स जाए सेमती नाही जे मु किछि माने मो निजर कॉपीराइट अछि बा एस जिंस मु कहूनी, बट see, I want the people who are like really giving their hard work should get the benefit out of it. That is my sincere request and advice. That's all. ठीक है? हाँ. Sir, for 30 marks, what should be the word limit? I mean, for 20 marks and 10 marks. See, 30 ପାଇଁ ତ ପ୍ରଥମେ ଫାଷ୍ଟ ଜିନିଷ ଏଇନା ଭାବନ୍ତୁନି, ମୁଁ ଯେମିତି ଆପଣ କହିଲି, ଆପଣ ଏ ପର୍ଟିକୁଲାର ଇଏରେ ଆପଣ ୟୁଜ କରିପାରନ୍ତି, ବଟ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ ଯେତେବେଳେ ଆମେ 60 ମାର୍କର ଲେଖୁଥିଲୁ ନା, ହ୍ୱାଟ ଇଜ ମାନେ ଥମ୍ବ ରୁଲ ୱାଜ ଲାଇକ୍ 8 pages, 60 marker କହୁଛି, 8 pages and 3 diagram compulsory. It was a thumb rule for the 60 marker. ठीक ଅଛି? Accordingly scale down करते you'll get it. But for a 10 and 15 marker, I'll tell you, for the 10 marker, it will be around 2 to 2.5 pages. 2 to 2.5 pages. Okay, including one diagram at least. It is a geography student. You have to write. You have to incorporate one diagram. You may say, you just give me any topic, I'll give you a diagram. Being a geography student, you should incorporate diagram, maps for sure. And So one diagram in each page or no. 10 marker at least gotte diagram to rohibo hi rohibo. Gotte diagram, at least gotte diagram, not in each page. I'm telling you overall answer. There should not be any answer. How much like out of context it may be, but any answer, any of your answers should not be without a diagram. Okay, make your mind in that way. Sir, diagram will be large or small? नहीं, large small है किसी मतलब नहीं, it should be clear. And one more thing, answer लिखला बेलू नहीं साइड रे डायग्राम करिवे, बहुत जन को मु खराब अभ्यास देखिछि, एमती आंसर लिखुथिबे आउ आंसर चलची ए साइड रे गोटे डायग्राम करछथि. नो, keep a space, draw here, then start writing here. माने सर बीच रे कले भी चले, माने मझी रे भी यदि कवर है जो टोटल चले मझी रे ही रखंतु. एक्चुअली तो आमे एमती तो केबे एक्चुअली स्टार्ट करिया कथा भी नै जे डायरेक्ट आंसर आपण स्टार्ट कले और सीधा गोटे डायग्राम स्टार्ट करछथि. It should not be. Write some lines, at least an introduction, give a context to it, then draw the diagram, then follow. But so ଯଦି UPSC ଭଳି क्वेश्चन ଆଉ ଜାଗା ଦେଇଦବ ଦେନ୍ ତ ସାଇड ରେ ହିଁ ବନେଇବାକୁ ପଡିବ. See, ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗିବ ସେଇ ଟାଇପ ର କି ବହୁତ ଏକ୍ସଟେନ୍ସିव ଡାଇଗ୍ରାମ କରିବାର ଅଛି, ଦେନ୍ ସାଇଡ ରେ ବନେଇବେ. ଯଦି ସିଙ୍ଗଲ ଗୋଟେ ଡାଇଗ୍ରାମ ବନେଇବାର ଅଛି କାହିଁକି କ୍ଲିୟର ବନେଇବେ? yes. So that, see, whenever I am suggesting something, it is not very thumb rule type of ଜିନିଷ. ମୁଁ ଏମିତି suppose ଆପଣ କହିଲେ 2.5 pages, suppose UPSC ବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ପେସ୍ ଯଦି ମାନେ already fix କରିକି ଦେଇଦେଲା, ଆପଣ କହିବେ 2.5 pages. ସେଟା ହିଁ ଗୋଟେ ଡାଉଟ୍ ଥିଲା କି UPSC ରେ ଯେମିତି ସ୍ପେସ୍, ଶୁଣନ୍ତୁ, ସେଇଟା କହିବା actually ମୁସ୍କିଲ ଯେ UPSC type of pages ଦବ ନା ଦବନି. But to be on the safe side, what we have discussed कि ଆମେ ମାନେ କଳିଙ୍ଗରେ ଆମେ କଣ କରିବୁ ନା, at least 2 tests will try to put in that way. ଯେତେବେଳେ ଆମେ फाइनल ओवरऑल टेस्ट କରିବୁ ନା, ଆମେ କିଛି ସେଇ ଟାଇପ ର, ଯେହେତୁ ଆପଣ ନର୍ମାଲ ପ୍ରାକ୍ଟିସ ତ ବି କରୁଛନ୍ତି ନା, ଆମେ ସେଇ ଟାଇପ ର ବି ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିବୁ, ତାକି ଏମିତି ନ हो ଯେ एकदम ଯାଇକି ଆପଣ ମ୍ୟାଚ୍ ରେ ଫେସ୍ କରିବେ. ବୁଝି ପାରୁଛନ୍ତି? The max we can do is we can predict and we can prepare accordingly. The exact question that we going to come, see why I am supposed to predict, because ମୁଁ जो ଜିନିଷ predict କରିବି ହିଁ ନାହିଁ, ମୁଁ guarantee ସହିତ ଜାଣିନି.
सर जदि हम वर्ल्ड मैप बने दवा तो ताला हाफ पेज पूरा कवर हो जिवो ना नहीं नहीं बिल्कुल हबनी सेटा ही मु आपन जस्ट कहया मु टी डाइवर्ट हे गेली कहूली से जिंस कि ज्योग्राफी स्टूडेंट आपन हेछन ना आपन को इंडिया मैप वर्ल्ड मैप और ओडिसा मैप एटा ना आपन को फिंगर टिप रहतिया दरकार एंड इट शुड नॉट टेक मच ऑफ योर टाइम वर्ल्ड मैप मैक्स टू मैक्स 20 सेकंड इंडिया मैप 10 सेकंड मैक्स and 10 second भी बहुत हेरानी less than 10 second and Odisha map so it can take like 10 second 20 second it is the maximum वर्ल्ड मैप जेतले आपण ड्रा करछन ना मिनी वर्ल्ड मैप ड्रा करिया सिखिबे आपण बुझी परछन तो एशिया यूरोप अफ्रीका अमेरिका रो दीटा पार्ट एती देखाउथवा देखो it should not be partially draw करियो partial also that also one important aspect sometimes na you have to draw the partial maps जेतले सपोज ए गुजरात रीजन महाराष्ट्र रीजन सदर्न इंडिया रो किछि रीजंस को आपण देखाउ जते इट नीड नॉट नीड टू ड्रा द फुल मैप the partial maps also will do जेतले आपण यूरोप और अफ्रीका रो पार्ट देखिया चाहछो then you may skip the america part बुझी परले according to the question so that's what I am telling कि आपण लेखंतु प्रथमे I have given you a bit of context based on this you see from your answers you write no issues but write at least सर जो 50 मार्क 30 मार्क दिए जे आपण 20 मार्क वाला लिखि हुई ना नहीं एबे बाय तो लेखंतु जो क्वेश्चंस आपण देजन सेही टाइप रो लेखंतु बिकॉज़ जेंता हम कहले ना एडा को टिके गोटे थर प्रैक्टिस करी के जिबा हां ओके सर ठीक अछि तो एबे जहां पचार दिछन सेही टाइप आपण लेखंतु ठीक अछि रेस्ट एश्योर फ्रॉम नेक्स्ट टेस्ट जो भी टेक्स्ट आपण को रोल आउट होची सेही तो आपण को से 10 और 15 मार्क रो ही क्वेश्चंस आसीबा आपण को ओके तो whatever the options and the possible questions that it may come your and not only questions but also in pattern also जेंते आपण कहले आंसर शीट रो स्पेस छाडी कि से सब टाइप रो जिंस को हम प्रैक्टिस करी के ही जिबा ओके एंड एमती नहीं क्वेश्चंस केवल आसीबा और केवल डिस्कस करिबा that is your task no you have to write then discussion then finally out the overall package हो जोटा के आपण को हेल्प करिवो अदरवाइज केवल डिस्कशंस का केवल राइटिंग विल नॉट हेल्प यू ओके we'll try our best to accommodate I expect your contribution to this process also ठीक है so we'll wind up for today okay sir